So actually karma is very intricate. Krishna says in Gita, karmano hi api bodhavyam cha vikarmanah akarmanascha bodhavyam gahana karmano gatihi. That this gati, understanding of karma is very gahan. You know, gahan मतलब बहुत ही डीप है. ये इतनी आसानी से समझ में आने वाला नहीं है तुमको. मतलब इसने इसको थप्पड़ मारा, इसने इसको थप्पड़ मारा, ये भगवान ने थप्पड़ मारा कि इसने थप्पड़ मारा? आप लोग यहां बैठे, पधारे, कृपा की. मेरे वजह से आप आए कि अपने वजह से आए कि भगवान भेज दिए? क्या हुआ एग्जैक्टली? मेरे लेक्चर में एक क्वेश्चन पूछा और जवाब देना, गिफ्ट देता हूं. अभी सामने कुछ रखा नहीं है, पर आ जाएगा. यस यस, ऑल थिंग्स, ऑल थ्री थिंग्स. बैट्समैन क्रिकेट खेलता है, बॉल आता है, यॉर्कर, बोल्ड. तो बैट्समैन ने बॉल को स्पेस दिया कि बॉलर ने स्पेस निकाला कि लॉर्ड ने स्टंप उखाड़ा? क्या हुआ? What happened? Yes, bowler, he got the space. Sure, he knew that the batsman will just put his bat little late. Yes, did he know that? Or did the batsman take some? No. I mean, Chennai Super Kings का होगा तो लिया होगा. हाँ? Yes, what actually happened? No, but batsman intentionally तो स्पेस नहीं छोड़ा ना. तो who is the cause? I am asking who is the cause? किसको पकड़ना है? इसका मतलब उसको बोल्ड नहीं होने का था, बराबर ना? नहीं होने का था. तो मैं वही कह रहा हूं, गलती किसकी नहीं पूछ रहा हूं, कॉज कौन है? देखो, उसकी इच्छा नहीं थी बोल्ड होने की, पर वो हो गया. और इसको ऑफ कटर मारना था, वो स्विंग होके यॉर्कर चला गया. समझ रहे हैं ना? तो हु इज द कॉज? बैट्समैन इज द कॉज, बॉलर इज द कॉज. जो बॉलर ऐसा ये करके जाएगा, इज ही द कॉज? देन व्हाई इज ही सेलिब्रेटिंग? So anyways, this karma is a very subtle topic. So that is what I wanted to actually inform you. We are going to go into the algorithm. Unlike last time, I don't have that much time this time. We have little less time. So we are going to cover the best part in a way that when you go from here, you should be able to see everything properly. Means, when you see something, when you look something and you see something, they are two different things. You know what is the meaning? Look and see का दो words क्यों है? दोनों एक है कि दोनों different है? I look at the flower vase and I see the flower vase. What is the difference? Are they two same words? Do they mean the same? Difference of detail. How much depth I am looking at. Depth. Look is very casual. Yes, somebody else would like to try. ये लोग पहले प्राइज हो चुके हैं. Yes. Looking means just to look at it. Okay. Seeing means to analyze it. Okay. To analyze it. Good. You can clap for him. He made a valid point. Because I don't have time, so I will not give more chances. Actually, you know, cockroach, उसके सामने से मिस यूनिवर्स जाएगी. He looks or no? He looks or no? Yes? Does he look or no? He looks. But does he see the beauty? She is like, you know, that, you know, Miss Universe का ताज लेके. But he does not see the beauty. He looks. So when you look at some object, you look by your eyes, but you see by your mind. You understand? So any action contains duality. You know what is duality?
Like that bowler yorked the ball and he got the wicket. So it is joy for whom? The bowler. And it is pain for batsman. In this world, there is coin. किसी पास सिक्का है क्या? सिक्का क्या आजकल 500,000 के नोट आ गए? Yes, he has got a सिक्का. No? One. Okay, I'll give you later. No, it's okay. One is okay. Now look at this coin. What is written? अब यहाँ पे 2 लिखा है, 2. And what is behind? Shingam. So now, if I remove this Singam by Chingam and only give 2, will it be valuable? Or if I only keep this Singam and I don't write anything here, and I say whatever you want you write, will it be valuable? So these two sides of the coin are called Dvandva. You know what is Dvandva now? Duality. So this is karma. Something is good for someone and that very thing is bad for someone. So actually when you say that, अरे मैं इतना अच्छा आदमी हूँ यार, आज तक मच्छर भी नहीं मारा, मच्छर भी आया तो इतना प्यार से भगाता हूँ, लेकिन ये जालिम दुनिया मेरे भावनाओं को कदर नहीं करती है ना, ये प्यार मुझे नहीं समझ पाएंगे, मैं इतना अच्छा आदमी हूं, ऐसा कौन सोचता है? मैं अच्छा आदमी हूं, ऐसा कौन सोचता है? तू ही सोचता है, तू ही रे, तू ही वो मूर्ख है जो ये सोचता है कि मैं अच्छा आदमी हूं। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है, मतलब तुम दुखी हुए हो, इसका मतलब कोई, तो उसके सुख में चले जाओ, अच्छा है ना, तुम भी सुखी हो जाओगे। बॉलर को जाके बोला बेस्ट है, अच्छे बॉलिंग किया। सो नाउ द पॉइंट इज दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ डुअलिटीज। यू आर गेटिंग द पॉइंट? एनी एक्शन दैट यू डू, it will either give happiness or distress, and it is compulsory. So I just wanted to make this duality point before I get into my PPT, because once I go into it I don't want to again discuss this there. Okay.